Hello and welcome to GeoMind. This is the part second on sedimentary structures. Before starting the video, I would like to tell you that I'm really very sorry for not maintaining the continuity, and it has been a long time since I posted the last video. But here we are back again with another video, and I'm going to assure you that the videos will come no matter what. Okay. So my name is Swapnil, and if you're new to the channel, don't forget to like, share, and subscribe to this video. Okay. And if you want to join my Telegram group, I have given the link in the description below. But please make sure that you hit the like button. Okay, it will help me and this channel to grow. So in this video, we will discuss the rest of the sedimentary structures, such as irregular stratification. And under irregular stratification, we will discuss all these structures like flame structure, convolute bedding and lamination, ball and pillow structures, okay, dish and pillar structures, scour and fill structures. Also, we will discuss the biogenic structures. Okay, so as you know, this chart is very important. Okay, so this chart I have taken from Sandbox, or you can also pause this video and note these things down. Okay, so in the previous video, that is the first video of the sedimentary structure, I discussed this chart, right? What is this and what is this? So as you know, these this right one column here represent the factors which are responsible for these structures you see here in the left side of column. So as you can see, there are some numbers that are given. These are some of the causative factors which are responsible for the formation of these structures. For example, let's say if you have hummocky cross stratification, okay, so this we have discussed in the first video. So hummocky cross stratification के ऊपर पे, as you can see here, number 1 is written, right? So number 1 represent first depositional structure. So you can say that hummocky cross stratification is a type of depositional structure which is formed by suspension settling, current and wave form. Okay, so basically you can say these are formed by storm action, right? So this we have discussed. So as you can see, the rest of the structures we will discuss in this video, and most of these structures are irregular type of structures, and some of them are type of deformational structures, okay, such as if you talk about flame structure, तो flame structure is your type of load and founder structure. तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, okay. And also we will talk about biogenic structures such as stromatolites, okay, your burrows, trails, all those things, okay. Most of them are your type of trace fossils. तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन कौन से हैं. So as you can see, bedding plane markings are also the structures we are going to discuss today. Okay, most of the these structures are basically found on your bedding plane. So bedding plane, as you know, is a plane which are basically which is basically connecting two strata, right? So let's say this is your first strata, this is your second strata, or you could say this is your first bed and this is your second bed. So in between there is going to be a plane, right? So this region is known as bedding plane. Sorry about my voice, I have some fever right now, but okay. So this is your bedding plane. So whatever the structures that are found in this bedding plane are your bedding plane markings, okay. So this we will be discussing today also. This is again a different chart I have taken from Richard Shelley book, okay. So this is just basic. This is showing the what type of structures are these. Like for example, scour and fill is a type of pre-depositional structure. Pre means basically the bed are depositing after the formation of these structures. Like for example, channel has formed first, and after that there was deposition of the bedding. Syn-depositional basically mean the structures. These structures are being formed at the same time as the formation of the bedding, okay. And post-depositional means that these structures such as slump, slide,
convolute lamination. These are basically your post-depositional structures. It means that after the bedding or the strata has been formed, and due to some reasons after that, the structures are formed. So these are your पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स. नाम से ही पता चल रहा है, काफी इजी है समझने के लिए. ठीक है, तो पोस्ट डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जनरली दीज आर योर डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन कब होगा, जब आपका बेड ऑलरेडी डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड ड्यू टू सम फोर्सेस, ओके, व्हाटएवर द रीजंस आर देयर, उसके बाद आपका जो बेड है वो डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आपके पास बचेंगे डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स. ओके, so moving to your first structure that we are going to discuss is your herringbone cross stratification. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, राइट. herringbone cross stratification is generally forming at your tidal regions, right? There's a tidal flat, basically wherever your tides are coming, right? For example, if there is a high tide, low tide, right? तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा that first the tide is going towards this region, right? Let's say that this is your coast. Okay, so toward coast your water will come, right? The direction of the water will be towards your coast. Okay, let's say this is the tide which is coming in. तो ये टाइड आपकी आ रही है और दिस टाइड विल कैरी द पार्टिकल्स, राइट, सैंड पार्टिकल्स, sedimentary particles, whatever. Okay, and it will deposit the particles like this, in this fashion, right? So we have already discussed that cross stratification is a very excellent geopedal indicator, which basically determines your paleocurrent direction and also the younging direction, okay, in which the bed is younger, in which direction the bed is younger. So as you can see, let's say if this is a type of cross stratification that you are seeing, it means that tide has come in this way, and after some time the tide has retreated. ठीक है, तो टाइड वापस से क्या है, रिट्रीट कर रही है. तो रिट्रीट करेगी तो वापस से जो सैंड पार्टिकल्स हैं, इट विल बेसिकली डिपॉजिट इन दिस डायरेक्शन, right? So first you will have this type of cross stratification, again this type of cross stratification, फिर इस तरीके से होगा, right? फिर इस तरीके से होगा, and you will get this type of cross bedding. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं herringbone cross stratification, and this is a typical of your tidal flats or tidal regions. Okay, so this we have not discussed in the previous video. So here is again, you can see the herringbone cross stratification in sandstone. Again, we did not talk about some of the important topics such as interference ripples or tadpole nests. So interference of ripples basically means that when you have ripples, right? ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. ठीक है, रिपल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिपल्स का जब इंटरफेरेंस होता है, बेसिकली मींस इंटरफेरेंस का मतलब भी क्या होता है कि आपस में जब रिपल्स इंटरफेयर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से डिप्रेशन एंड एलिवेटेड पार्ट बनाते हैं. ओके, सो इफ यू कैन फोकस ऑन दिस इमेज हियर, you can see that interference is causing the formation of these dome-like structures, and then there is depression, 3D domes, and then there is small depressions. तो इनको हम बोलते हैं tadpole nests. Okay, tadpole आपको पता है, it is related to your what is that called, right, your young frogs, right? So these are called tadpoles. और tadpole के जो nest होते हैं, frog के जो nests होते हैं, they look like this. So the crux is that you have to remember that tadpole nests are the structures which are caused by interference of ripples. Okay. Then we will be talking about flazer, wavy and lenticular bedding. तो ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. Basically, these are type of beddings you might have read in your classes, college or school, whatever. So you can see in this image there are 3 types of bedding. First is flazer, second is wavy, and third is lenticular bedding. तो नाम से पता चल रहा है कि this is also a type of cross stratification, but in this
basically there is two types of sand particles. Sorry, two types of sedimentary particles. First is your sand, and second one is your mud. Obviously, they both are different because of their sizes. Mud is smaller in diameter. Okay, mud particles are smaller in diameter. It is made up of clay and silt, while sand is larger in dia when we are comparing it to mud. So basically, these beddings are formed by mixture of these two sedimentary particles. So when we have flazer bedding, in flazer bedding, you can see that mud is uh, very low in amount and sand is high in amount, right? So this grayish region you see here, right? This region, this is your mud, right? So these are very small lenses of mud. तो small lenses of mud हैं जिस bedding में, and rest is sand. So this type of bedding is called flazer bedding. If there is equal amount of mud and sand, then it is called wavy lamination. Okay, now remember the term here, lamination. Most of the time the beds you will see here are centimeters in size. Rarely you have bedding. And then if you have a large amount of mud, then you will have lenticular lamination. Okay, so this is pretty simple. This is again found in your coastal regions. Okay, so sorry, your flazer, wavy and lenticular laminations are found in your tidal mud flats, generally your coastal regions. Okay, so flazer and lenticular bedding. So environment, you have to know that in which environment these type of structures are found. So this represent your sedimentary environments, and sorry, so in this environment you will find your flazer laminated and flazer, lenticular and wavy beddings or laminations. Next, we will talk about the irregular and deformational structures. Okay. So यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि जो structures होने वाले हैं हमारे, so these structures are going to be irregular in fashion. Okay. Okay, so the structures are going to be irregular in fashion. It means there is no पैटर्न. ओके, तो पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे क्रॉस बेडिंग में यू आर गेटिंग सम टाइप ऑफ डेफिनेट पैटर्न लाइक दिस. In these irregular or deformation structures, you will not get any pattern. Okay, and you can also say that deformation structures are type of post-depositional structures. So first one is your convolute bedding. Okay, so convolute bedding में basically what is happening, you have your intricate crumplings of beds or laminations. Okay, तो basically यहाँ पे क्या होता है, small scale anticlines. Okay, anticlines, you know that anticline is basically a fold. Okay, like this. So pretty basics to understand. तो छोटे छोटे folds यहाँ पे anticlines होते हैं, in which both limbs are down dipping.
okay, and there is a upright fold, you can say, okay, and then there are sink lines, right? So convex up and concave up, okay. Anticline is sorry, sink line is your concave upwards, right? So convolute bedding look like this. So this you can see a type of anticline, right? And this is a type of sink line here. Now, as you can see, generally there is no faulting, okay. So this basically happens in your fine sands or silty sands, okay. Fine sand and silty sand. So basically the beds are not very competent, and due to that there is no faulting, only plastic deformation, okay. So how they are formed? They are formed by the plastic deformation of partially liquefied sediments. तो सेडिमेंट्स जो बेसिकली होते हैं वो सिल्टी सैंड्स एंड फाइन सैंड्स के होते हैं, और वो उसमें जनरली क्या होता है, these sedimentary particles of sand and silts are basically filled with water, okay, or liquid, whatever, generally there is water. तो ये liquefied रहते हैं, and due to some tectonic forces these will get convoluted into small scale folds and small scale anticlines and synclines, okay. Now the convolute lamination, you have to remember, is that they are most common in turbidite succession, okay. Turbidite succession आपको पता है, we have discussed turbidite succession in the previous lectures, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है basically, if I move you back to this region, so here you can see the underground canyon, the submarine canyon, and here is basically your avalanche which is happening in the submarine region. तो यहाँ पे आपके turbidites, sedimentary gravity flows in your deep submarine fans will happen, and यहाँ पे आपके turbidites deposit होंगे, okay. So in this liquefied sedimentary particles of sand and silts, basically your convolute bedding will be there, okay. So this is what your convolute bedding looks like, okay. Most of the time they are very fine laminations and there will be no faulting, okay. Then there is your flame structures. तो नाम से पता चल रहा है flame. Flame basically means whenever you light a fire you will have this type of structure, right? ये flame जैसा structure आपको दिखता है, जैसे आग चलती है, like fire is burning. So if you look at this diagram here, diagrams are most important because आपको जो समझ आएगा, conceptual knowledge जो आपकी आएगी वो diagram के through आएगी, है ना. तो यहाँ पे if we focus on this image, and let me just zoom it, right. So if you look at this image, you can see that these structures, they look like flames, okay. तो इसी के कारण हम इसको flame structures कहते हैं, okay. Flame structure. Now again this is a type of deformational structure, okay. Now this flame structure is basically made up of mud. So mud, basically you know that mud is very fine particles. Mud is made up of very fine particles. तो mud में जो जितने भी particles होते हैं वो silt या clay के होते हैं, okay. Silt or clay. So what happens is that if there is a sand layer, now sand you know is thicker than your clay or silt particles, or you could say mud, and then at the bottom is your mud, right. So what happens is that due to overloading
overloading of this heavy particles, the liquefied mud will basically push through the bedding plane, कुछ इस तरीके से, ठीक है, and it will squeeze upwards. ओके, तो बेसिकली होता क्या है, वाटर सैचुरेटेड मड लेयर्स होती हैं जो लेस डेंस होती हैं, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली इसके पार्टिकल्स ज्यादा हैवियर होंगे, ज्यादा डायमीटर के ज्यादा बड़े होंगे. Okay, there will be more diameter of the size difference is very high, and also the density difference is also high. So what happens is that less dense mud will basically squeeze up through this bedding plane, and they will form this type of flame structures. Okay, right, again you can see this is the field image, and here you can see right, this you can see is fine mud, right, and over is your sandstone, right. तो ये स्क्वीज कर जाएगा इसके बेडिंग से ऊपर, ओके, तो it will look like flame. So this you have to remember that it is a part of your deformational structure, okay, or post-depositional structure. Then again there is ball and pillow structures. तो ball and pillow structures are basically, नाम से पता चल रहा है that there are these structures which look like balls, kidney balls or kidney shaped structures. Okay. Okay. So it is formed, these ball and pillow structures are again deformational structures. तो basically foundering का मतलब basically होता है breakup होना, ठीक है, basically breaking up into smaller particles or smaller segments. So result of foundering and breakup of semi-consolidated sand, okay, or limey sediments, whatever. So यहाँ पे भी liquefaction is very important. Liquefaction is very important factor which is responsible for the formation of these structures. Okay. तो liquefaction of the mud basically causes the overlying sand. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि that in the previous flame structure, the flame structure was being made by the mud, but here the ball and pillow structure are being made by the sands, ठीक है, overlying sands. तो ऊपर आपके sand है and below is your mud, right, liquefied mud. तो जो ओवरलाइंग सैंड है वो इस तरीके से आपके बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर्स बनाएगी, राइट, इस तरीके से, जैसे कि आपके यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज टिल्टेड. ओके, आप ये मत कहिएगा कि ये ऐसा क्यों है, दिस बेड इज टिल्टेड, ठीक है. तो लिक्विफाइड मड रहेगी और ऊपर से जो लोड रहेगा वो इस पे आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो यू कैन से अ टाइप ऑफ लोड स्ट्रक्चर, ओके, क्योंकि if we go back to this that okay, so ball and pillow structure number 7, okay, तो ball and pillow structure number 7, तो load and founder structure. तो फ्लेम स्ट्रक्चर आपको भी ध्यान में रखना है that flame structure is a type of load and founder structure, क्योंकि लोड पड़ रहा है किसका, ओवरलाइंग heavy sands का मड के ऊपर, and due to that the flame and ball and pillow structures are being formed. Now moving on to sedimentary folds and faults. तो नाम से पता चल रहा है sedimentary, यानी कि जब आपका beds are being deposited, okay, beds are being deposited and at the same time there is your deformation happening, okay. Penny contemporaneous is the word which is being said here. तो इस वर्ड से डरना नहीं है, it basically means the deformation is happening immediately after the deposition of the sediments, okay. So basically slump structures are typically occurring in your mudstone and sandy shales. It means
the particles diameter are very small. Okay, so wherever these structures are found, folds and faults, it means that the deposition was happening rapidly. Okay, तो रैपिड डिपोजिशन के कारण क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन भी हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट योर फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स विल बी क्रिएटेड. ओके, तो इन कॉन्वोल्यूट लैमिनेशन और बेडिंग आपको ध्यान में रखना है दैट देयर इज लिटिल बिट ऑफ फॉल्टिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे आपको थ्रस्ट फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं एट वेरी स्मॉल स्केल्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू your dish and pillar structures. Okay, so dish and pillar structure are basically your dewatering structures. Okay, dewatering. So what is dewatering? Basically what happens is that if you have a bed, sedimentary bed, suppose you have sandstone, and if it is filled with fluid or water, okay, filled with water or fluid. Remember, when I'm talking about fluid, basically means water here. Now, due to some pressure, okay, overhead pressure or overburden pressure, what happens is that this water is getting squeezed out of these beds, right, like this. ठीक है, upward ये move करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से. और you can say that you have sand and mud again. So due to this contrasting nature of the particles, sedimentary particles, what happens is that the water is getting escaped out of this bed, and due to this escaping of the water, you will have these structures which are formed like cross section of a dish. ठीक है, डिश जैसे कि जिसमें आप खाना खाते हो, प्लेट कुछ इस तरीके से होती है ना, बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, ऐसे तरीके से. तो if you look at this cross section of the dish, you will see that it looks like this, है ना, dish. And sometimes there is pillar also, जहां से पानी निकलता है, कुछ इस तरीके से escape होता है, ठीक है, यूं फिर यूं, इस तरीके से पानी निकलता है. So you will have dish and pillars. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, you can I think it is not very clear, but you can comprehend that ये जो features हैं, these features are your dish structures. Okay, so movement of fluid up from the lower layer result in the formation of dewatering structures, which are called dish and pillars. The dish and pillar structures again are common in your turbidites. ठीक है, turbidites. तो sedimentary gravity flow जिसमें rapid deposition होता है generally in the submarine regions, ये turbidites है, and यहाँ पे आपके dish and pillar structures मिलेंगे. Now we are moving to erosional structures. Okay, तो अभी तक हमने पढ़ा deformational structure. हम पढ़ेंगे the structures which are formed due to erosion, which is caused by different factors such as water, wind, okay, whatever. So इसको हम क्विकली देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको नाम याद रखने हैं. जैसे रिल मार्क्स, तो रिल मार्क्स बेसिकली आर formed due to the water channels, okay, passing through the सैंड और लूज मड. ओके, तो आपको पता है कि वाटर कुछ इस तरीके से मूव करता है, राइट. जनरली ये बेडिंग प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से डेंड्रिटिक पैटर्न यू विल सी इन योर मड और सैंड व्हाटएवर, एंड क्रॉस सेक्शन यू विल सी दिस लिटिल बिट ग्रूव्स. ओके, क्रॉस सेक्शन में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये स्मॉल चैनल्स जो है इनको हम बोलते हैं रिल्स. ओके, तो रिल मार्क्स. Sometimes due to wind there can be furrows and ridges. Okay, तो कुछ इस तरीके से रिज, बीच में रिज फॉर्म होगी, ये रिज फॉर्म होगी, फिर यहाँ बीच में फरोज. ओके, ड्यू टू दिस विंड मूवमेंट. ओके, ड्यू टू यू कैन से दीज एडी करंट्स. ओके, तो कुछ इस तरीके से फरोज एंड रिजेस आपके फॉर्म होंगे. Then there are bounce, prod and skip marks. Okay, so these are basically formed due to tool, इनको हम tool marks भी कहते हैं, tool marks. So what happens if you have a river, let's say this is the cross section of the river. ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, आप साइड से रिवर को देख रहे हो, मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम किसका है, वाटर का है. एंड इस रिवर में यू हैव दिस stones or small particles of stones.
So what will happen? Sorry, these stones will hit the bottom of the bed and then they will again bounce up. Sometimes they will just scrape the top of the bed, okay, like this, agar heavy hoga to. And sometimes they will move in this fashion, like saltation fashion, okay. ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो इनके कारण जो भी आपके मार्क्स बनते हैं बेड पे, उनको हम बोलते हैं टूल मार्क्स, ओके। सो शेवरॉन, ग्रूव्स, स्किप मार्क्स, दीज आर बेसिकली योर type of tool marks, okay, right? So there, this you can see, okay. तो बाउंस मार्क्स, ओके, तो बाउंस मार्क में बेसिकली क्या होता है, टूल बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टोन है, ओके, दिस इज द बेस ऑफ द रिवर बेड, ओके। So here you can see the tool is approaching at low angle, okay, low angle, तो लो एंगल से अप्रोच करेगा और फिर ये हिट करके इट विल अगेन बाउंस बैक अप, तो इसको हम कहते हैं बाउंस मार्क। देयर कैन बी ब्रश मार्क्स आल्सो। So in brush marks, basically what happens, again the tool is approaching at low angle, but here the bed is forming a little bit of a ridge, ठीक है, ridge यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रश मार्क्स, ओके। Then there is prod marks. Prod mark is when the tool is approaching at high angle, okay, high angle, तो टूल क्या है, हाई एंगल पे अप्रोच कर रहा है एंड देन इट अगेन इट इज बाउंसिंग बैक। तो हाई एंगल पे इफ द टूल इज अप्रोचिंग और द स्टोन व्हाटएवर इज अप्रोचिंग, then that is known as prod mark. Then there is roll mark. Basically tool is rolling like this, okay, रोल करके जा रहा है, तो उसमें जो भी बेड पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे रोल मार्क। एंड देन देयर इज स्किप मार्क, ओके। सो इन स्किप मार्क बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये सॉल्टेशन बेसिकली हो रहा है, ओके, रोल नहीं हो रहा है, बस लिटिल बिट देयर इज बाउंसिंग, ओके, लाइक दिस, then a little bit of bouncing like this, and then little bit of bouncing like this. So this is known as skip mark, okay. Sorry. So saltation you have to remember in the skip mark, ठीक है। So roll marks में basically roll हो रहा है, यहाँ पे roll नहीं हो रहा है। Then there are scour structures. Scour structures basically होता क्या है कि if you have a bed, river bed, okay, and you have this stone, let's say huge stone is there, and the direction of the current is like this, ठीक है, इस तरफ रिवर मूव कर रही है। अब ये बड़ा स्टोन है, दिस इज नॉट मूविंग, ओके, सो व्हाट विल हैपन इज दैट द करंट विल पास अराउंड दिस स्टोन, ठीक है, इसके अराउंड। तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज द स्टोन एंड करंट इज मूविंग लाइक दिस। तो इसके कारण जो स्काउरिंग होगी, बेसिकली वट एवर द इरोजन दैट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस, दैट इज नोन एज ऑब्स्टिकल स्काउर। Now there is flute mark. In flute mark you can see that there is no obstacle, okay. Sorry, there is no obstacle. So let's say if I have this is the river, this is the base of the bed. So what happens is that let's say this is the current direction. तो यहाँ पे क्या होगा, let's say कि कुछ due to the change in the velocity of the current or whatever, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डिफरेंट एडीज विल बी फॉर्मिंग। तो यहाँ पे जो टॉप ऑफ द बेड है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिप्रेशन अगर फॉर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लूट, ओके, फ्लूट। So here you can see this is the direction of the current, और ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो रखा है, ओके, ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। So this flared away part or this opening part which is much larger than this closing part,
तो यहाँ पे बेसिकली क्लोज हो रहा है और यहाँ पे खुल रहा है. द लिम्स, if we talk about the structure, you can see that there are two limbs, right? First, second. So limbs are basically opening towards the current direction. Okay, ये आपको ध्यान रखना है इसमें फ्लूइड में. Then there is gutter cast. Gutter cast में basically क्या होता है, जो scour जो होता है, basically scour is there due to current action, and again this scour, this depression is filled by these sediments. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गटर कास्ट. तो करंट डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये एरो है करंट डायरेक्शन की. ओके ओके, अगेन यहाँ पे भी डायरेक्शन है. ओके, so this you have to remember. Sorry. Now let's talk about bedding plane markings. Now bedding plane markings are basically again the previous structures were also the bedding plane markings, but what happens is that when these depressions, that the scours and the fluids, they get filled up by the sediments. Okay, तो जब ये filled up हो जाते हैं, as a you could say these depression are actually like molds, है ना, मोल्ड की तरह है, और इसमें जो सेडिमेंट फिल्ड अप हो जाते हैं उनको हम बोल सकते हो कि कास्ट हैं, राइट? मोल्ड एंड कास्ट, सिमिलर टू योर फॉसिल्स, राइट? ट्रेस फॉसिल्स जैसे होते हैं या फॉसिल्स होते हैं, मोल्ड एंड कास्ट. तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है. तो व्हेन दीज आर फॉर्मिंग, देन दे आर जनरली फॉर्मिंग एट द बेस ऑफ योर बेड्स. ओके, लाइक सोल मार्किंग्स. ओके, तो जैसे फ्लूइड मार्क है, अगर वो फ्लूइड मार्क फिल्ड अप हो जाता है, राइट, ये लेट्स से दिस इज द डिप्रेशन एंड दिस डिप्रेशन इज गेटिंग फिल्ड अप. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव रिलीफ यहाँ पे बना देगा, पॉजिटिव रिलीफ. ओके, बना देगा, एंड दिस विल बी अगेन नोन एज फ्लूइड कास्ट. ठीक है, तो जो इरोजनल सोल मार्किंग होती है, जो वो फिल्ड अप हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेडिंग प्लेन मार्किंग्स. ओके, so as you can see in this image, this image basically represent the evolution of this is the first and this is the last evolution of the type of fluid mark. तो basically होता क्या है, this is the this black is the bed. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लूइड मार्क बना, इरोजन हुआ, फिर जो सेडिमेंटरी पार्टिकल्स हैं ये डिपॉजिट हुए हैं और कुछ इस तरीके से ये बन चुका है. फिर टेक्टोनिक अपलिफ्टिंग हुई और वेदरिंग हुई, तो जो ये मड है वो वेदर हो चुकी है, और जो ये फ्लूइड मार्क जो बना था, ये अगर इसमें डिपोजिशन हुआ तो ये कास्ट बन चुका है. सो दिस इज फॉर्मिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज नोन एज फ्लूइड कास्ट. और अगर ये ओवरटर्न हो गया है, तो उल्टा हो गया है, लेट्स से ओवरटर्न हो गया है, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर में दिखेगा हमें, राइट? इस तरीके से, राइट? सो दीज आर टाइप ऑफ ग्रूव कास्ट. ठीक है, ग्रूव, तो हमारा ग्रूव बना कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर फिर डिपोजिशन हुआ, तो ये पॉजिटिव रिलीफ बन गया और ये ओवरटर्न हो गया. ओके, ये ओवरटर्न हो गया, तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्रूव में जो कास्ट हुआ होगा, ये उस तरीके से हमें मिल जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ द बेड. बेस ऑफ द बेड कैसे, अगेन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, दैट यू हैव द, लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ ग्रूव कास्ट का. ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेट्स मेक इट इन 3D. इस तरीके से आपका ग्रूव बन चुका है ना. सॉरी. तो यहाँ पे अगेन आपका डिपोजिशन हुआ, और अभी डिपोजिशन होगा तो ये फिल कर देगा उसको, ग्रूव को, है ना. तो आप इस ब्लू वाले बेड पे ये कुछ इस तरीके से बेस पे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव रिलीफ यहाँ पे बना देगा, राइट? द पॉजिटिव रिलीफ विल बी फॉर्म लाइक दिस, राइट? यहाँ पे अब ये ओवरटर्न हो चुका है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा लाइक दिस, राइट? So you can say that this is a type of soul marking.
सोल का बेसिकली मतलब क्या होता है, द अंडरसाइड, जैसे आपका फुट का सोल होता है, सिमिलर टू दैट यू कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ सोल मार्क, राइट. सिमिलरली यू हैव योर फ्लूइड कास्ट. तो फ्लूइड कास्ट कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ओके, इलोंगेटेड रिजेस होती हैं व्हेन द फ्लूइड स्कावर मार्क इज फिल्ड. ठीक है, ये फिल्ड हो गया तो ये ओवरटर्न हो गया, तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट. So the flared up or the opening of the arms are basically representing the paleocurrent direction. ठीक है, करंट इस तरीके से चल रही होगी. So this you can see फ्लूट मार्क है ना, ये फ्लूट मार्क है. अब ये फील्ड अप हो जाएगा, तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था. अब ये लेट्स से कि ओवरटर्न हो गया है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा, राइट. इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो डायरेक्शन यहाँ पे होगी. सिमिलरली ऑब्स्टिकल स्कावर, ग्रूव है ना, ग्रूव मार्क्स हमने देखे थे, ग्रूव कास्ट देखे थे अभी, राइट. दीज आर अगेन फ्लूइड कास्ट्स. These are basically underside of the bed. You have load cast. Load cast में हमने देखा flame structures. Okay, तो flame structures are basically a type of load structures. This we have discussed. Okay. Okay. So load cast में basically होता क्या है कि one you have your flames, but these structures, these are type of load cast. ठीक है, ये flames तो है mud की, लेकिन when these let's say कि ये mud erode होगी और ये overturn हो चुका है. Okay, so you will get your load cast like this. These are irregular basically. तो ये irregular होते हैं, and load cast are basically not good paleocurrent indicators. Okay, जैसे fluid cast है, तो fluid cast is basically a good paleocurrent indicator, but load casts are not, because these are irregular in shape. Okay, so this you have to remember, and they are similar to ball and pillow structures. Then you have mud cracks. तो mud cracks नाम से पता चल रहा है when there is basically the mud is heated and with sun rays. Okay, and the tension cracks are basically forming in these on the surface of the beds of this mud. तो यहाँ पे आपके mud cracks बन जाएंगे. इनको हम desiccation cracks भी बोलते हैं. Okay, तो जो wet sediments होते हैं, basically wet mud होती है और उस पे intense heat, when there is intense heat being incident upon the top of the mud bed, wet mud surface. So what will happen, there will be cracks that will be generated, or cracks sometimes they will move down the bed. तो इनको हम बोलते हैं desiccation cracks. Okay, it looks something like this. Fine grained mud, okay, settles in quiet water, and then water evaporates due to heat, and then again so these mud cracks will be formed. Okay, so these are your bedding plane markings. Okay, so when these mud cracks are basically extending downward from the top, so these are known as desiccation cracks. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है, desiccation crack like this. तो mud cracks ये है ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो, and these mud cracks are being extended downwards towards the lower region, तो इसको हम बोलेंगे desiccation crack. Then there is Syneresis cracks. So Syneresis cracks are basically similar to desiccation cracks, but there is one thing that you have to remember, that they are infilled by mud similar, only slightly coarser in grade than that in which they grew. तो यहाँ पे जो cracks होते हैं, basically they are having the sediments which are coarser than mud. Okay, and they are smaller than the desiccation cracks or mud cracks, and they form subaquously. ठीक है, तो पानी के अंदर ये फॉर्म होते हैं, नॉट above the water. This you have to remember. Okay, so they form subaquously. This you have to remember. Okay, so desiccation cracks again, they can be distinguished from the Syneresis cracks if they are associated with the rain prints, vertebrate tracks, other indicators of subaerial exposure. तो अगर आपके पास cracks देखने को मिल रहे हैं, and you can't distinguish whether it is a Syneresis or desiccation crack, so if you are getting any tracks of the any biogenic activity there, okay, like rain prints, rain prints is not a biogenic activity, but vertebrate tracks, the tracks of the animal or footprints of the animals,
These indicates that, or rain prints, this indicates that the mud is exposed to the aerial or the atmosphere. Okay, so you can see that this is a mud crack. लेकिन अगर आपको ये कुछ इस तरीके से मिलता नहीं है तो आप कह सकते हो कि रेन प्रिंट नहीं मिलते हैं या और इंडिकेटर नहीं मिलते हैं सब एरियल एक्सपोजर के. सो यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ सब एक्वस क्रैक और सिनेरेसिस क्रैक. देन देयर आर बायोजेनिक स्ट्रक्चर्स. तो बायोजेनिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होता है, ट्रेस फॉसिल्स आप कह सकते हो. ठीक है, तो बायोटर्बेशन, बायोस्ट्रैटिफिकेशन, बायोइरोजन, एक्सक्रीटमेंट, ये सब आपकी पेलेंटोलॉजी के टॉपिक्स हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एंशिएंट टाइम्स में इफ the tracks of the animals or any biological activity of the animals are being preserved, this will come under the biogenic structure. Okay, like boarding of the animal, feeding of the animal, locomotive activities, anything. Okay, and then there is a bioturbation index. ठीक है, grade 1, grade 2, grade 3. तो कुछ इस तरीके से क्या है कि जितना ज्यादा ग्रेड बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एनिमल की एक्टिविटी जो है, बायोजेनिक एक्टिविटी जो है बेड के ऊपर, वो उतनी ज्यादा है. ठीक है, लेट्स से कि यू हैव योर बेड और उसमें कुछ इस तरीके से वर्म्स रह रहे हैं. ओके, एंड इफ देयर इज एक्सट्रीम रिवर्किंग ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस बाय द वर्म्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से बरोइंग है, कुछ ज्यादा ही है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसका ग्रेड जो है, बायोटर्बेशन का ग्रेड जो है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो लाइक हाइपोरिलीफ, हाइपिक्निया, एक्सिक्निया, दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर पेलेंटोलॉजी. तो इसमें हम डीप नहीं जाएंगे. तो आपको ध्यान में रखना है कि बायोटर्बेशन स्ट्रक्चर्स और बायोस्ट्रैटिफिकेशन. बायोटर्बेशन में बेसिकली होता है क्या है कि योर टॉप ऑफ द सरफेस इज बीइंग रिवर्क्ड बाय द एनिमल्स, सच एज यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कोलिथोस. ओके, दिस इज द नेम फॉर योर टनल्स व्हिच आर मेड बाय द बरोइंग वर्म्स. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेडिमेंट्स आर बीइंग रिवर्क्ड हियर. ओके, एंड अगेन दीज आर लाइक, फॉर एग्जांपल, if I can zoom it. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सेडिमेंट है, इसमें इस तरीके से टनल बनी हुई है. Okay, straight tubes. So these straight tubes are known as scolithos. Okay, similarly there are different very different names given to different types of structures like rhizophicus, cruziania. Cruziania is basically a structure related to trilobites. तो ट्राइलोबाइट की जो भी एक्टिविटीज हैं, अगर वो हमें सरफेस पे मिलती है, लाइक क्रॉलिंग और एस्केपिंग एक्टिविटीज, अगर आपको सरफेस पे मिलती है तो these are known as cruziania. Okay, and here you can see what type of biogenic structures you will find in what type of environment. Okay, like cruziania is related to your crawling structure of trilobite. तो आपको यहाँ मरीन एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएगा. Sublittoral zone. Okay, so this chart represent basically, I don't know if you can see here, but this is given in your sandbox. Okay, तो ये नाम दे रखे हैं. आपको पता है कि इक्नोफॉसिल्स भी हम ट्रेस फॉसिल्स को कहते हैं, एंड इक्नोफॉसिल्स, तो इक्नोफेसिस यहाँ पे दे रखा है. फेसिस का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस इक्नोफॉसिल्स. तो ये नाम है, इतने नाम करने की जरूरत नहीं है. ओके, ओनली यू हैव टू नो दैट दीज आर टाइप ऑफ योर बायो structures. Okay, so this was all about these sedimentary structures. Okay, if you want this images, you can ping me, and or you can pause the video. Okay, and note them down. These names are important. No, names आ सकते हैं कि स्कोलिथोस क्या है. स्कोलिथोस is a type of what? A biogenic structure. Okay, और बायोटर्बेशन स्ट्रक्चर. तो ये आप बोल सकते हो. अगेन बायोटर्बेशन में बेसिकली क्या है, बरोज, ट्रैक्स आपके आगे, ट्रेल्स आगे. ठीक है, वट एवर द डिफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग ड्यू टू बायोजेनिक रीजन्स. एंड बायोस्ट्रैटिफिकेशन में आपका क्या होगा कि जैसे स्टोमेटोलाइट्स है, तो स्टोमेटोलाइट्स आर बेसिकली दीस मैट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया. तो स्ट्रैटिफिकेशन अगर है बायोजेनिक एक्टिविटी के कारण, तो उसको हम बोलेंगे बायोस्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स. होपफुली यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना जरूर ना भूलें. थैंक यू, स्टे सेफ, गुड बाय.